गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का हमारा पहला टॉपिक है पीएम गति शक्ति। तो ऑफ कोर्स ये आपके इकोनॉमी सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, रादर यूनियन कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि जो रेलवे का लैंड होता है जिसको लॉन्ग टर्म लीज पे दिया जाता है, उसकी जो टर्म्स ऑफ लीजिंग है उसको थोड़ा चेंज किया जा रहा है, थोड़ा ईजी बनाया जा रहा है। अब ये लैंड जो है कार्गो रिलेटेड एंटरप्राइजेज, पब्लिक यूटिलिटीज़, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स और इवन स्कूल्स जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए भी दिया जा सकता है। अब जो है रेलवे लैंड लीजिंग रेट्स को रिवाइज़ किया जा रहा है। अभी तक रेलवे जो है वो लीजिंग के लिए 6% के आसपास जो है वो एनुअल चार्जेस लेती थी, और वो हर साल जो है 7% इंक्रीज़ हो जाते थे, और ये लगभग 35 साल तक की लीज मिलती थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो भी लैंड की मार्केट वैल्यू होगी, करंट मार्केट वैल्यू होगी, उसका 1.5% पर एनम जो है वो गवर्नमेंट एज लीज लेगी, और हर साल 6% उसमें एनुअल इंक्रीमेंट लगेगा अप टू 35 ईयर्स। अब कौन कौन जो है ये लैंड लीज पे ले सकता है? तो ये कार्गो रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए, चाहे पीएसयू हो, कोई रेलवे की ही कोई कंपनी हो, कोई प्राइवेट प्लेयर हो, कोई भी फ्यूचर प्लेयर जो है वो ये लैंड ले सकता है। लेकिन अगर रीन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स लगाए जा रहे हैं तो वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली रेलवेज ही उसको यूज़ करेगा, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्कूल्स या हॉस्पिटल्स वो भी रेलवे के ही बेनिफिट्स के लिए या फिर पब्लिक एट लार्ज के बेनिफिट के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं पीएम गति शक्ति है क्या। तो पीएम गति शक्ति जो है वो 2021 में अनाउंस किया गया था। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें 16 मिनिस्ट्रीज आपस में इकट्ठे होकर आई हैं और लास्ट माइल कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाकर इंडिया में देने वाली हैं। तो इसके 6 पिलर्स क्या हैं? एक तो सेंट्रलाइज पोर्टल बनाया गया है, तो कॉम्प्रिहेंसिवनेस है, एक ही जगह पर सारा कुछ इकट्ठा कर दिया गया है। प्रायोरिटाइजेशन, आपस में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जो 16 मिनिस्ट्रीज़ के, वो देख सकते हैं कि हमको कौन सा प्रोजेक्ट जो है इस टाइम पर प्रायोरिटाइज करना चाहिए। ऑप्टिमाइजेशन, अब सबसे अपने जो है प्रोजेक्ट्स, जैसे आपको पहले भी मैंने एक बार एग्जांपल दिया था कि कई बार हम देखते हैं कि रोड जहाँ पर बनने वाली है वहाँ पर जो है अगर रेलवे आ रहा है तो उनको अगर पता लग जाए कि रेलवे आ रहा है तो ऑफकोर्स उसके बाद रोड बनाएंगे ना वो, नहीं तो रेलवे जो है लाइन जो है वो रोड को तोड़ देगी। तो इसलिए जो है इस पोर्टल के थ्रू वो देखा जा सकता है, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा कि हम किस टाइम पर कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च करें। सिंक्रोनाइजेशन, आपस में कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, तो हर डिपार्टमेंट आपस में सिंक्रोनाइज कर सकता है अपनी एक्टिविटीज़ को। एनालिटिकल, जो ये डेटाबेस दिया जा रहा है ये जीआईएस बेस्ड है, तो इससे आप पूरी प्लानिंग जो है वो पूरी आपके 200+ लेयर्स से दिख सकती है कि क्या जो है टूल्स का यूज़ किया जा रहा है, कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो इस टाइम पर चल रहे हैं और या फिर आने वाले हैं। डायनामिक है, टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप मॉनिटर कर सकते हो प्रोग्रेस को, जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ऑन ग्राउंड प्रोग्रेस भी पीरियडिकली आप मॉनिटर कर सकते हो, और जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर आप वाइटल इंटरवेंशंस भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसमें पीएम गति शक्ति के टारगेट्स क्या हैं? 100 लाख करोड़ का नेशनल मास्टर प्लान है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करना चाहते हैं हम, ऐसी कनेक्टिविटी देना चाहते हैं कंट्री में। 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स लेके आएंगे, 2 न्यू डिफेंस कॉरिडोर्स लेके आएंगे, 4G कनेक्टिविटी सारे विलेजेस में लेके आएंगे, 17,000 किलोमीटर का गैस पाइपलाइन नेटवर्क भी प्लान किया जा रहा है। उसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? नेशनल नेटवर्किंग ग्रुप, जिसमें एक्सपर्ट्स और ऑफिशियल्स जो हैं सारे डिपार्टमेंट्स के, स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स के इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिक्वायरमेंट्स फॉर पैकेज कमोडिटीज़। तो ये आपके गवर्नेंस सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स क्या लीगल मेट्रोलॉजी डिवीजन ने डिसाइड किया है कि लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज कमोडिटी रूल्स 2011 को जो है चेंज किया जाएगा, अमेंड किया जाएगा। तो लीगल मेट्रोलॉजी होता क्या है? तो बेसिकली लीगल रिक्वायरमेंट्स जिससे कि आपकी स्टैंडर्ड वेट्स जो है या पैकेजिंग रूल जो है वो डिफाइन किए जाते हैं, उसको हम कहते हैं लीगल मेट्रोलॉजी। तो अब आपको पता है कंट्री में पैकेजिंग के थोड़े जो है रूल्स स्टैंडर्डाइज होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वेट्स और मेजर्स या फिर जो भी आपकी पैक्ड कमोडिटीज़ हैं उनके जो है रूल्स जो है वो डिफाइन होने चाहिए। ठीक है, सो लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज कमोडिटी रूल्स जो हैं वो एक पब्लिक गारंटी देते हैं कि हाँ, जो आपने प्रोडक्ट्स खरीदे हैं उसका वेट्स और मेजरमेंट्स जो है वो असल में ही उतना है जितना पैकेज पर लिखा गया है। तो जो ये एस्टैब्लिशमेंट करते हैं वेट्स और मेजर्स के स्टैंडर्ड्स की, वो यूनियन लिस्ट का एक सब्जेक्ट है, तो उसमें ऑफ कोर्स यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और इन लॉज को इन्फोर्स करने के लिए जो आपके प्रोविजंस बनाए जाते हैं वो कंकरेंट लिस्ट में मेंशन है, तो ऑफ कोर्स स्टेट्स भी उसमें जो है अपने हिसाब से, अपने नीड्स के हिसाब से लॉज बना सकती है। सो अब हम देखते हैं कि 2011 के रूल्स क्या कहते हैं।
2011 के रूल्स कहते हैं कि नेम और एड्रेस मेंशन होना चाहिए मैन्युफैक्चरर का, पैकर का या इंपोर्टर का। प्री पैकेज कमोडिटीज़ जो है वो इंस्पेक्ट होनी चाहिए। जो प्रिंसिपल डिस्प्ले होता है आपका जो भी पैकेजिंग के ऊपर, वो टोटल सरफेस एरिया जो है पैकेज का, जिस पे सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्प्ले होनी चाहिए, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि आपको कंज्यूमर को राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है, तो इसलिए सारी जो है इन्फॉर्मेशन उसको अवेलेबल होनी चाहिए ताकि वो ठीक से इन्फॉर्म चॉइस जो है वो ले सके। फिर अब हुआ क्या, क्यों चेंज करने की जो है वो आपके डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कई बार नेसेसरी डेक्लेरेशन या प्राइम कंस्टिट्यूएंट्स, जो आपके प्राइमरी जो आपके प्रोडक्ट के अंदर चीज़ें यूज़ की गई हैं, वो कई बार प्रॉपरली मेंशन नहीं की जाती हैं, लेबल नहीं की जाती हैं पैकेजिंग पे। तो इसलिए मैन्युफैक्चरर्स कई बार फॉल्स क्लेम कर देते हैं, तो ऑफकोर्स कंज्यूमर के इंटरेस्ट वायलेट होते हैं। इसीलिए जो है ये अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गई हैं, जिसमें कहा है कि आपको इंग्रेडिएंट्स और न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली देनी है बैक ऑफ द पैकेजिंग में, और एटलीस्ट मिनिमम 2 प्राइम कंपोनेंट्स जो हैं जो आपके प्रोडक्ट में है उनको पैकेज के फ्रंट साइड पर लिखना है अंडर द ब्रांड नेम, ठीक है। फिर इसमें ऑफकोर्स जो आपके मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कमोडिटीज़ हैं, ये रूल्स उनके ऊपर जो है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे, कर भी नहीं सकते उनके लिए हम ये रूल्स, इसलिए उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है। फिर उसमें कहा है कि अगर आप कोई अपने प्रोडक्ट की यूएसपी बता रहे हो, जैसे इसमें एग्जांपल बहुत अच्छा दिया है कि अगर आप कह रहे हो कि आपका मॉइस्चराइज़र एलोवेरा का मॉइस्चराइज़र है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि कितना % या कितना कॉम्पोजिशन है उस एलोवेरा का, वरना तो आप जो है नाम आप यूज़ करोगे एलोवेरा मॉइस्चराइज़र, आप दिखाओगे आपके जो है कंपोनेंट्स में वो 10% भी अगर एलोवेरा यूज़ हो रहा है, तो फिर आप उसको एलोवेरा मॉइस्चराइज़र कह के नहीं बेच सकते हो, ठीक है। तो अभी जुलाई 2022 में भी कुछ चेंजेस किए गए थे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को कहा गया था कि आपको कुछ मैंडेटरी डिक्लेरेशंस देनी है। अगर आप जो पैकेजिंग पे नहीं दे पाते हो तो आपको QR कोड बनाकर देनी है, और उसके बेसिस पर डिजिटल फॉर्म में ये जो है मैंडेटरी डिक्लेरेशंस कंज्यूमर्स देख सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। तो अभी आपके इकोनॉमी सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स। याद होगा आपको 2020 के टाइम पर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम गवर्नमेंट लेके आई थी, जिसके अंदर कुछ लोन्स दिए गए थे MSMEs को। अब कहा गया है, एक RTI में रिवील हुआ है कि उन हर 6 में से एक लोन जो है उसमें जो है वो बैड लोन टर्न हो चुका है जस्ट 27 मंथ्स में। लेकिन सिचुएशन इतनी भी बुरी नहीं है, क्योंकि लगभग जो छोटे लोन्स हैं, जो 20 लाख रुपए तक के लोन हैं, वही जो है वो बैड हो रहे हैं मोस्टली। तो 16.22 लाख अकाउंट्स जो हैं जिन्होंने लोन लिया था, उसमें से 16.4% जो लोन्स हैं वो बैड हुए हैं, ठीक है। वो नॉन परफॉर्मिंग असेट जो है वो कन्वर्ट हुए हैं। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जो छोटे लेवल पर जो MSMEs हैं, जो माइक्रो यूनिट्स हैं, वो जो है डिस्ट्रेस में है। तो माइक्रो यूनिट्स क्या होती हैं आपकी, जिनकी इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में लगभग 1 करोड़ तक की होती है, 1 करोड़ से कम होती है, और उनकी टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ होती है, ठीक है। फिर आपको स्मॉल यूनिट्स भी पता होगा कि इन्वेस्टमेंट जिनकी प्लांट मशीनरी में 10 करोड़ तक की होती है और उनकी टर्नओवर 50 करोड़ से लेस होती है। मीडियम एंटरप्राइजेज जो होती हैं, जो उनकी इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक की होती है और उनकी टर्नओवर 250 करोड़ से कम होती है, ठीक है। तो मोस्टली माइक्रो यूनिट्स ने जो लोन्स लिए, वो ही जो है वो NPA में कन्वर्ट हो रहे हैं मोस्ट ऑफ द लोन्स। तो अब हम ECLGS के बारे में देख लेते हैं। तो वन ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज स्कीम्स थी फाइनेंस मिनिस्ट्री की, जिसमें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर को लोन दिए गए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा। उसके लिए नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड भी बनाई गई, ताकि जो आपके बैंक्स हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या अदर लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको गारंटी दी जा सके कि आप लोन दो, कोई बात नहीं, अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो हम जो है वो लोन में की गारंटी दे रहे हैं, ठीक है। सो ऑफ कोर्स लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस ताकि इमरजेंसी क्रेडिट दे सके बिजनेस एंटिटीज़ को, इसलिए ये स्कीम लाई गई थी। अब ये स्कीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अदरवाइज 3 लाख करोड़ तक के जो है लोन्स दिए गए थे, और अब उसकी लिमिट बढ़ाकर 4.5 लाख कर दी गई थी। और अभी हमने कुछ दिन पहले देखा है कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को भी जो है अगस्त 2022 में गवर्नमेंट ने इंक्लूड करके टोटल जो है ECLGS की जो है अमाउंट है उसको 5 लाख करोड़ कर दिया गया था। मतलब 50,000 करोड़ एक्स्ट्रा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को लोन्स देने के लिए ईयरमार्क कर दिए थे। अभी तक लगभग 3.67 लाख करोड़ के लोन्स जो है वो ऑलरेडी सैंक्शन किए जा चुके हैं, और 1.14 करोड़ बोरोवर्स जो है वो इसमें लोन ले चुके हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ओणम। तो ये आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो PM मोदी ने लोगों को ओणम के फेस्टिवल पे ग्रीट किया है।
केरला में खासकर ये फेस्टिवल मनाया जाता है पैडी हार्वेस्ट के लिए। और इस टाइम पर जो है किंग महाबली को जो है लोग वेलकम करते हैं। 10 डे लॉन्ग फेस्टिवल होता है ये, चिंगम मंथ में जो है सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि फर्स्ट मंथ ऑफ मलयालम कैलेंडर है। 10 दिन तक मनाया जाता है फेस्टिवल। पहला दिन और 10th दिन जो दिन होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। और कैसे सेलिब्रेट करते हैं, ग्रैंड फीस्ट रखी जाती है, उनासदया कहते हैं जिसको, 9 कोर्स मील होती है वो। एक वलामकली, ये भी बहुत फेमस है, स्नेक बोट रेस होती है जो पंपा रिवर पर जो है वो जिसको खेला जाता है, तो ये भी बहुत फेमस पार्ट ऑफ ओणम होती है। ठीक है, सो अब इसमें जो है आपकी दो तरह के बहुत फेमस डांसेस हैं, काइकोटी कली और थुम्बी थुलाल, ये आपके विमेन जो है परफॉर्म करती हैं ओणम पर। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सोलर पावर ड्रोन्स। तो आपके साइंस एंड टेक के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सिक्योरिटी एस्पेक्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना ने फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो है वो टेस्ट कर लिया है और इसका विंग स्पैन लगभग 164 फीट है। एक लार्ज मशीन है, प्रॉपरली ये सिर्फ सोलर पैनल से ही जो है पावर किया जा रहा है। नाम इसका कीमिंग जिंग 50 या फिर मॉर्निंग स्टार 50 रखा गया है। लगभग 20 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड या उससे भी ऊपर ये उड़ सकता है, तो इसका मतलब ये सैटेलाइट फंक्शंस भी जो है वो कंडक्ट कर पाएगा और ये सर्वेलेंस या रिकॉनेसेंस के लिए भी चाइना इसको आने वाले टाइम में मिलिटराइजेशन भी इसकी कर सकता है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेडलाइन फॉर फिक्सिंग पोल्यूशन कंट्रोल सेंटर्स। तो यूनियन एनवायरनमेंट ऑफकोर्स आपके एनवायरनमेंट के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि वो तीसरी बार जो है कोल पावर प्लांट्स को पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज इंस्टॉल करने के लिए उनको एक्सटेंशन दे रहे हैं डेडलाइन की। तो इसको ऑफकोर्स कुछ क्लाइमेट एक्टिविस्ट ने जो है वो क्रिटिसाइज भी किया है कि आप इतनी एक्सटेंशन क्यों दिए जा रहे हो, उनको जल्दी से जल्दी पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज जो है वो इंस्टॉल करने दो। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ने पहली बार ये एमिशन नॉर्म्स निकाले थे कोल फायर्ड पावर प्लांट्स के लिए, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मरकरी जो है उसके एमिशंस के ऊपर उन्होंने कहा था कि कंट्रोल करना है। और क्योंकि जो है बहुत से प्लांट्स जो है वो कंप्लाई नहीं कर पाए, प्रोग्रेस भी इसकी लिमिटेड रही है, तो इसलिए इस नोटिफिकेशन को 2025 तक पुश कर दिया गया है। लेकिन एनसीआर रीजन के जो 10 किलोमीटर रेडियस में पावर प्लांट्स लोकेटेड है, उनको ये जो है डेडलाइन 2024 दिसंबर तक जो है वो आपको इन प्लांट्स को जो है वो फुलफिल करनी है। बाकी सबके लिए क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया में अगर वो आते हैं तो उनको 2025 डेडलाइन कर दी है, और बाकी जितने भी अदर पावर प्लांट्स बचते हैं कंट्री में उन सब के लिए 2026 की डेडलाइन बना दी है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रामचंद्र मांझी। तो बिहार के बहुत फेमस भोजपुरी फोक थिएटर आर्टिस्ट लौंडा नाच के जो है आर्टिस्ट रामचंद्र मांझी जी जो है उनके जो है वो डेथ हो गई है 97 ईयर्स की एज में। तो लौंडा नाच क्या होता है, एक बहुत ही फेमस भोजपुरी फोक आर्ट है, जो कि जिसमें सॉन्ग्स, डांस, कॉमेडी, सटायर, पैरोडी या थिएटर जो है वो किया जाता है। इसमें जनरली मैन जो है वो विमेन को इम्पर्सनेट करते हैं, साड़ी, ब्लाउज या हेयर विग पहन के जो है वो अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is PM Gati Shakti. So you know that this topic is important for our economy section. So recently the central government through a cabinet decision has made it simpler and cheaper for various entities to set up their infrastructure projects on railway land on long-term lease basis. So all the cargo related enterprises, public utilities, even renewable energy projects and schools or social infrastructure projects like schools, they can access the railway land for lease. So otherwise the railway land leasing rates were very high, but now the central government has decided to bring them down, and this will give railway land otherwise the railway land on lease is being given at annual lease charge of 6%, and it has an increment rate of 7% per annum for the period of 35 years. But now the policy that has been introduced is that cargo terminals and cargo related activities on the railway land will now attract 1.5% of current market value of that particular land per annum, of course, and this amount will increase 6% annually for up to 35 years, that is the leasing period. So cargo related activities can be taken up by any player, be it any PSU, railway, private player, etc. But the renewable energy plants can only be taken up by for the exclusive use of railways, and social infrastructure projects must be taken only for railway beneficiaries or for the public at large.
So what is PM Gati Shakti? So PM Gati Shakti, of course, was announced in 2021, and it's a digital platform to bring 16 ministries, including, of course, the railways and roadways, to provide last mile connectivity and through infrastructure projects. So there are 6 pillars of PM Gati Shakti. We have already discussed about it just a few weeks ago. So it provides comprehensiveness. How it is giving a centralized portal whereby all these ministries and departments can have look over each other's activities, how the other ministry is performing, what are the projects that they are planning, how they can also monitor the projects that the other ministries have already implemented. So it will also give them a prioritization benefit. So if, like I was telling you that if roadways ministry wants to have a national construct a national highway or repair a national highway, they will be able to see that low let's wait until the railway ministry is planning to have a railway line over this particular area. We will construct the road only after that. So basically prioritization will be facilitated, and optimization will be also facilitated, because otherwise uh, if there is no coordination, then there would be double expenditure of the government. Once they will construct the road, then a railway line would be established there. It will damage the roads, and then the roads will have to be reconstructed. So optimization of resources would happen, of course. Lack of coordination which is there in between the ministries and departments will be tackled through this centralized portal. This is also giving a analyzing tools with almost 200 plus layers. So entire data will be available at the disposal of the users, and it will be a dynamic portal. So it will basically give the ministries and departments real time progress, or they will be able to monitor the projects on real time basis through this GIS based portal. So what are the targets under PM Gati Shakti? So of course 100 lakh crore national master plan includes in the 11 industrial corridors, and 1.7 lakh crore turnover in defense production, and also 38 electronic manufacturing clusters and 109 pharmaceutical clusters by at least 2024 and 25. So it will cut logistic costs also, increase cargo handling, and reduce the turnaround time at ports to boost trade. Also, it aims to have 11 industrial corridors and 2 new defense corridors, and the aim is also to extend 4G connectivity to all villages. Apart from that, 17,000 kilometers of gas pipeline network is also being planned. So this national networking group, which consists of experts and officials from all stakeholder departments, will be implementing this PM Gati Shakti master plan. So the next topic is requirements for packaged commodities. So this topic is important for your governance section. So Department of Consumer Affairs Legal Metrology Division has recently notified a draft amendment to Legal Metrology Rules 2011, in which the utilization of standard weights and packaging standards has been mentioned, and these rules ensure that a public guarantee is available to the consumer, so that security and accuracy of weighments and measurements can be established. So when you purchase a product, if it is mentioned that it is 50 grams, how would you ensure, what will be the guarantee that it is 50 grams? So basically this is giving you this legal metrology rules enforce these provisions, that you cannot cheat the consumer. Also there are certain rules through which upon the packaging you have to mention the details. So these rules or these standards or of weights and measures are established by the union government, because it falls under the union list, but the enforcement of those provisions, for that concurrent list subject is there. So basically even the states have the power to make laws according to the local needs. So what are the 2011 rules? So they say that name and address of the manufacturer or packer or importer must be mentioned clearly. All pre-packaged commodities must be inspected. The display panel on the package must have, means the total surface area of the package, which should be containing the information required. All the information should be grouped together, and it should be given in one place. So you cannot just scatter the information all around the product, so as to confuse the consumer. So consumers have the right to be informed, and these rules do not apply to mechanical or electrical commodities.
So, why the need for new amendments? Because it was observed that many producers, packagers, or importers were not properly labeling the necessary declarations or prime constituents of their products. So, consumers were vulnerable because they were misled by manufacturers for false claims. So now the government has decided to amend these provisions. So now you will have to list the ingredients involved in the nutritional information on the back of the packaging. At least two prime components should be mentioned on the front side of the package with the brand name. So if you are listing a particular thing as the USP of your product, like the example here is the aloe vera moisturizer. If you are using this aloe vera moisturizer, then you should also disclose how much percentage of aloe vera is there in that moisturizer. Otherwise, you are just fooling the consumer. So in July 2022, the Department of Consumer Affairs had already notified the legal metrology packed commodities rules for the electronic products, so that they can give the relevant information to the consumer through a QR code. So basically, in digital format, the information can be given. So this was available. This facility has been made available to the electronic products manufacturers. So the next topic is emergency credit line guarantee scheme. So this topic is important for your economy section. So you know that emergency credit line guarantee scheme was introduced by the government during the COVID pandemic, and it has been observed through an RTI that almost 1 in every 6 loans which were disbursed during under this ECLGS scheme has turned bad in just 27 months. So almost 16.22 lakh accounts were dispersed with the loans under the ECLGS, and out of them 16.4% have turned bad. But the good news is that mainly the lower end of the loan bands, which were the loans around up to 20 lakh rupees, they have mostly turned into bad loans. So it means that at the lower level, at the micro level, the distress in MSME sector is huge. And what are the micro units? Of course, micro units are those units which are having investments up to 1 crore rupees, and they have a turnover of less than 5 crore rupees. And the small units are those which have investment in plant and machinery worth 10 crore rupees and a turnover of less than 50 crore rupees. Similarly, medium enterprises having investment up to 50 crore rupees in plant and machinery and a turnover of less than 250 crore rupees. So mostly the loans which are under the micro units have turned bad. So what is this ECLGS? So ECLGS is a part of the comprehensive package which was announced by Finance Ministry in 2020. It aimed to aid micro, small, and medium enterprises sector, and this scheme is being implemented by the Ministry of Finance, and it provides 100% guarantee coverage to the banks, non-banking financial institutions, other lending institutions who have been providing loans to the MSME sector. So basically, this scheme has performed good. Almost 3 lakh crore rupees ECLGS was announced initially, and later on the amount was enhanced to 4.5 lakh crore. And as recently as August 2022, we discussed about it also, that 50,000 crore rupees extra has been earmarked for hospitality sector, which means almost 5 lakh crore rupee loans have been or loan guarantees have been given under the ECLGS scheme. So almost 3.67 lakh crore rupees loans have already been sanctioned, and more than 1.14 crore borrowers have been issued guarantee under the scheme. So the next topic is Onam. So this topic is important for your art and culture section. So PM Modi has recently greeted the people on the auspicious festival of Onam. So it is celebrated in the state of Kerala. It's a paddy harvest festival. It is celebrated to welcome King Mahabali. It's a 10-day long festival celebrated in the beginning of the month of Chingam, which is the first month of Malayalam calendar. The 2 days, the first day and the 10th day, are the most important of all. And it is celebrated with a grand feast called Onasadya. And it is also this Valamkari, the snake boat race, is very famous. It is held on the river Pampa. Okay, so two graceful dances are performed by women on Onam. These are Kai Koti Kali and Thumbi Thulal. So the next topic is solar powered drones. So this topic is important for your science and tech as well as your security section. So recently China has flight tested the first fully solar powered unmanned aerial vehicle. It has a wingspan of almost 164 feet. It is a large machine which will be powered entirely by solar panels. It is being named as Kimingzing
50 or Morning Star 50, and it will fly above 20-kilometer altitude. So it will operate in almost near space, and it will be able to carry out satellite-like functions also. So probably China will also militarize it, and it will be able to carry out reconnaissance and surveillance functions. So the next topic is deadline for fixing pollution control centers. So Union Environment Ministry has recently, for the third time, extended the deadline by which coal-powered plants must install pollution control technology. So this extension of deadline has been criticized by certain clean energy activists also. So of course, the emission norms for the coal-fired power plants involves controlling sulfur dioxide, nitrogen oxide, and mercury pollution, and non-compliance and limited progress by the power plants meant that the government had to extend this notification. Now the timeline has been pushed to 2025. So but the power plants which are located within the 10-kilometer radius of NCR, they will have time until December 2024 only. For the 10-kilometer radius power plants located in critically polluted areas, they will have time until December 2025. For all other power plants, the deadline stands at December 2026. So the next topic is Ramchandra Manji. So in Bihar, the famous artist Ramchandra Manji has recently passed away. He was very famous for Londa Nach. So Londa Nach is a prominent Bhojpuri folk art of Bihar, which consists of songs, dance, comedy, satire, parody, and theatre. In this art form, men impersonate women, and they wear sari, blouse, and they also wear long hair wig during their performance. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.